News Services Division of All India Radio presents Radio Newsreel. In this edition, in Sri Lanka, death toll in Sunday serial blasts in churches and hotels mounts to 321. Country observes National Day of Mourning. Filing of nominations for the sixth phase of Lok Sabha elections ends. Scrutiny slated for tomorrow and the last date of withdrawal being 26th of April. And India all prepared to deal with impact of US decision on exemptions from sanctions for countries still buying oil from Iran. In Sri Lanka, the death toll from Sunday's serial blast targeting churches and hotels has reached 321. The island nation is observing a national day of mourning today. The government imposed emergency in the country last midnight to ensure public security. More from our correspondent. Situation remains tense in Sri Lanka with daily life thrown out of gear after Sunday attack. There are inputs of some sporadic incidents and police is not taking anything to chance. Schools and colleges remain closed for the week while attendance in offices is low. At least 40 suspects have been arrested so far, while a Syrian national was held for interrogation today. The focus is shifting to investigation of foreign links behind the attacks, and Interpol is sending a team to probe international connections. The country is observing a day of mourning today in remembrance of victims. Santosh Kumar from Colombo. Filing of nominations for the sixth phase of Lok Sabha elections ends. Scrutiny of nominations will take place tomorrow, while the last date for withdrawal of candidature is the 26th of this month. 59 constituencies spread over 7 states will go to polls in this phase on the 12th of May. The Election Commission has banned Congress leader and Punjab Minister Navjot Singh Sidhu from election campaign for 72 hours for violating the Model Code of Conduct. The ban came into effect from 10 a.m. today. Earlier, the Commission issued notice to Mr. Sidhu for seeking votes on religious lines at a rally in Katihar district of Bihar. Several candidates, including 4 from BJP and 7 from Congress, filed their nomination for Lok Sabha elections. From BJP, cricketer turned politician Gautam Gambhir today filed his nomination for East Delhi Lok Sabha seat. Meenakshi Lekhi from her sitting seat, New Delhi, singer Hans Rajhans from Northwest Delhi, and Ramesh Bidhuri filed his nomination for South Delhi Lok Sabha seat. From Congress, Delhi Unit Chief Sheila Dikshit filed her nomination from Northeast Delhi Parliamentary Constituency. Ajay Makan from New Delhi, Mahabal Mishra from West Delhi, JP Agrawal from Chandni Chowk, Arvinder Singh Lovely from East Delhi, Olympic bronze medalist Vijinder Singh from South Delhi constituency, and Rajesh Lelotia filed his nomination from Northwest Delhi. The Supreme Court has issued a contempt notice to Congress President Rahul Gandhi for his remarks on Prime Minister Narendra Modi regarding the Rafale judgment. The court had earlier said the remarks were incorrectly attributed to it. A bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi today said it will hear the criminal contempt petition filed by BJP MP Meenakshi Lekhi against Mr. Gandhi on the 30th of this month, along with the pending review petition against its December last year's verdict in the Rafale jet deal. India is adequately prepared to deal with the impact of the US decision to end exemptions from sanctions for countries still buying oil from Iran. External Affairs Ministry spokesperson Ravish Kumar said in New Delhi that India will continue to work with partner nations, including with the US, to find all possible ways to protect India's energy and economic security interests. In a statement, the White House said that 5 countries, India, China, Japan, South Korea and Turkey will no longer be exempt from US sanctions if they continue to import oil from Iran after their waivers end on 2nd of May. After the announcement, US Secretary of State Mike Pompeo told reporters that there are no oil waivers that extend beyond that period. In November, the US granted a 6-month waiver to India and other countries to continue importing oil from Iran.
Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi has firmly said that centre will implement Ayushman Bharat scheme for free treatment of poor in West Bengal if voted to power, which is opposed by Chief Minister Ms. Mamata Banerjee. Addressing an election rally at Asansol of West Bengal this afternoon, the BJP leader said that 1 crore poor people of the state will be benefited by this scheme. He also asserted that the politics centering infiltration in the state will also be dealt with properly. The Prime Minister assured formation of National Traders Commission for the welfare of traders community in the country if voted to power again. Terming again West Bengal Chief Ms. Mamata Banerjee as speedbreaker, the senior BJP leader said that she has stood by those who cheated poor people by Sarada, Narada and Rose Valley scam. Mr. Modi criticized the Trinamool Congress chief for blaming the Election Commission and urged the people to cast their votes fearlessly. Meanwhile, Ms. Banerjee criticized the Prime Minister at different rallies in Hooghly district. Defence Minister Nirmala Sitharaman addressed the Naval Commanders Conference that began in New Delhi today. The 3-day conference is the apex forum within the service for interaction between the naval commanders. During the conference, the Chief of the Naval Staff with the Commanders-in-Chief will review major operational, logistics, training and administrative activities undertaken during the last 6 months and deliberate upon the course to be steered in the ensuing 6 months. In a statement, the Indian Navy said the conference assumes greater significance in the backdrop of Pulwama-associated events that have brought country's defence under sharper focus. It will provide the higher naval leadership a forum to discuss the emerging challenges in the maritime domain. The conference also serves as a platform for interaction of naval commanders with senior government officials. All India Radio, Publications Division and Children's Film Society of India were given Swachhta Pakhwada Awards 2019 in New Delhi today. Secretary in the Information and Broadcasting Ministry Amit Khare gave away the awards. Director General of All India Radio Fayaz Shehryar and Director General News Ms. Ira Joshi received the award for All India Radio. Deputy Director General, India Meteorological Department SD Athuri has said that weather-related advisories by the department to the farmers has resulted in the high yield of agricultural products across the country. He was speaking at the National Conference on Agriculture Extension held in New Delhi today. He said over 40 million farmers are benefiting from the advisories in local languages disseminated through SMSs by the Met Department, and there has been an increase in the production of all 22 principal crops. The conference had deliberations on most advanced technologies and recent scientific explorations in agriculture. In Philippines, at least 11 people have been killed and more than 100 injured in the 6.1 magnitude earthquake that jolted the northern Philippines yesterday. The quake hit 60 kilometers northwest of the capital Manila, disrupting air, rail and road transport and causing some damage to buildings and infrastructure. The worst of the damage was in the province of Pampanga, which was the site of all 11 fatalities, disaster officials said. The rescuers are scrambling to reach dozens of people feared buried under a building near Manila that collapsed due to the earthquake. The toll could rise as crews fanned out across the region to assess casualties in isolated hamlets that lost power and communications in one of the area's strongest tremors in years. In South Africa, the death toll from mudslide that crushed several homes in Durban early today has risen to 23. A 6-month-old infant is also among the deceased. At least 32 people have also been hospitalized. Search and rescue operation is on to trace the missing people who might be trapped under the debris. Heavy rains flooded southern and eastern parts of the country since the start of the Easter weekend. South African military personnel have been dispatched to help rescue and evacuation efforts. The UAE Space Agency and Mohammed bin Rashid Space Center (MBRSC) have announced that 85% of the Hope Probe project has been completed. Hope Probe is an ambitious dream project of UAE to send a mission to Mars. In a joint statement, the two organizations confirmed that most of the main parts of the project have been completed and are currently undergoing intensive testing to ensure every aspect of the probe is ready for activation a few months before the launch date.
With that, we end this edition of Radio Newsreel, edited and produced by Manmohan Joshi. Assistance in production, Mukesh Kumar. Narrator, Saira Mujtaba. नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। अगले 15 मिनट खेल जगत की ढेर सारी खबरें होंगी, चर्चा भी करेंगे उन पर। स्वीकार कीजिए लवलीन निगम का नमस्कार। और खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार जयदीप बासु को। जयदीप नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। तो जयदीप, आज देखा जाए तो स्पोर्ट्स के लिहाज से तो बहुत हैवी डे, जहां आज रेसलिंग भी है और बॉक्सिंग भी है, एथलेटिक्स भी है, बैडमिंटन भी है, टेबल टेनिस भी है और आईपीएल भी है। लेकिन सबसे अच्छी खबर रेसलिंग की। हाँ, रेसलिंग के और टोटली में आप देखिए कि हम जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, जितने आप अभी नाम बताएं क्रिकेट छोड़ के, सब में इंडिया अच्छे कर रहे हैं। ये सबसे एनकरेजिंग न्यूज़ है आज के लिए। तो सब पे चर्चा करेंगे। पहले जयदीप, आज की सुर्खियां। एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में आज भारत को 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद से पहले बल्लेबाजी को कहा। शिव थापा और आशीष कुमार ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्के किए। और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन कल गोमती मारीमुतु और तेजिंदर पाल सिंह तूर ने अपनी अपनी स्पर्धा के स्वर्ण पदक जीते। शुरुआत सबसे पहले हम रेसलिंग से ही करते हैं, जहां भारत को आज 1 स्वर्ण मिला है, 1 रजत और 1 कांस्य पदक। 65 केजी फ्री स्टाइल फाइनल बजरंग पुनिया कजाकिस्तान के सत्याबेक ओकासोव थे, उनके सामने लगभग एक तरफा मुकाबला कहेंगे, 12-7 से हराया। उधर 79 केजी फाइनल में प्रवीण राणा फाइनल में पहुंचे थे। स्वर्ण पदक की उम्मीद थी, लेकिन मोहम्मद तैमूरी से हार गए वो। और 97 केजी की बात अगर करें हम जयदीप, तो सत्यव्रत कादियान चीन के हाओबिन गाओ को 8-2 से हराया, कांस्य पदक जीता। दरअसल सत्यव्रत क्वार्टर फाइनल में हार गए थे, लेकिन क्योंकि उनको हराने वाला मंगोलियाई पहलवान फाइनल में पहुंचा था, तो उन्हें कांस्य पदक में उतरने का मौका मिला, जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। सबसे पहले बजरंग की ही बात करें, एक बढ़िया गोल्ड मेडल 12-7 से, मतलब कहेंगे कि अच्छी जीत। हाँ, अच्छी चीज़। और देखिए, उसका है कि इंटरनेशनल लेवल पे अपना जो फॉर्म है वो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। मतलब कई रेसलर्स को हम देखते हैं कि एक में अच्छे करते हैं, दूसरे में जाके कुछ फॉर्म उनका लॉस हो जाता है। लेकिन ये पिछले 3-4 साल में आप कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट उठा के देख लीजिए, ही हैज ऑलवेज फिनिश्ड इन द मिडल ब्रैकेट समहाउ और द अदर। ये इनके लिए एक बहुत, तो हम मतलब इसका यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये हम आशा कर सकते हैं कि अगले साल तो टोक्यो ओलंपिक्स, जिसके ऊपर सबका नजर है, तो है ना, तो इसमें ये हमारे लिए बहुत बड़ा होप होना चाहिए। और बाकी अगर हम प्रवीण राणा की बात करें या सत्यव्रत कादियान की बात करें, रवि कुमार जो है 57 केजी में हार गए, कांस्य पदक उनको नहीं मिला। लेकिन कुल मिलाकर एक सेटिस्फैक्टरी 1 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज देखा जाए एशियन रेसलिंग के हिसाब से। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एशियन रेसलिंग जो है तो काफ़ी, आप जानती हैं, काफ़ी टफ होते हैं। उसमें जो रेसलर्स आते हैं, सारे स्ट्रॉन्ग रेसलर्स आते हैं, और वो वर्ल्ड लेवल के रेसलिंग होते हैं। तो एशियन चैंपियनशिप ऑलमोस्ट लाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप होते हैं, तो उसमें मेडल जीतना तो क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस तो है। क्रेडिटेबल भी, और आगे का जो हम जैसे टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भी लगता है कि अच्छी तैयारियां चल रही हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं। आईपीएल की ओर रुख करें जयदीप, इस समय चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद के सामने है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई ने टॉस जीता, हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद ने अभी कुछ देर पहले तक 5वां ओवर चल रहा था, एक उनका विकेट गिर चुका था, 43 रन बना लिए थे। अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे और सनराइजर्स हैदराबाद जो है चौथे नंबर पर है। चेन्नई सुपर किंग्स नो डाउट जितने भी अभी तक सीजन्स हुए हैं उसमें बहुत अच्छा कर ही रही है, और अभी भी सेकंड पोजीशन पर है। एक अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच, क्योंकि सेकंड एंड फोर्थ ही हैं तालिका देखी जाए।
हाँ, वो अच्छा मुकाबला है। और सनराइजर्स हैदराबाद जो है उनके दोनों ओपनर के हिसाब से, मतलब डेविड वार्नर और बेयरस्ट्रॉ जिस हिसाब जो से खेल रहे हैं, तो वो सबसे एक्साइटिंग टीम माना लेकिन जाता है। ये उनका शायद लास्ट मैच है, क्योंकि न सिर्फ ये, बाकी कुछ और खिलाड़ी जो है अब अपने अपने देश लौट जाएंगे लौट वर्ल्ड जाए। कप की तैयारी हाँ, के लिए। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ओवरऑल तो काफी अच्छे किए हैं। और सीएसके तो आपने जैसा बताया, मेरे ख्याल अभी तक सिर्फ 2 ही मैच हारे हैं, और लास्ट मैच तो बहुत नैरोली हारे हैं। जी। दे ऑलमोस्ट वन द मैच। हाँ, सिर्फ एक रन से वो हारे थे, लेकिन मैच बड़ा रोमांचक था वो। कल रात जो मैच हुआ जयपुर में, दिल्ली कैपिटल्स राजस्थान रॉयल्स का, उसकी बात करें। दिल्ली कैपिटल्स ने हराया राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से। टॉस जीता था दिल्ली कैपिटल्स ने, पहले गेंदबाजी का फैसला किया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित ओवर में 20 ओवर में बनाए थे 6 विकेट पर 191 रन। दिल्ली कैपिटल्स ने 4 गेंद शेष रहते जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स मतलब सरप्राइजिंगली बोले, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी तक जो वो बॉटम लास्ट में होते थे, अब कम से कम एक मैच हालांकि कम खेला है, लेकिन दे आर लीडिंग द टेबल। नाम बदलने से लगता है कि कुछ खेल में भी परिवर्तन आया है। लगता है, क्योंकि उनके पास देखिए 2 बहुत एक्सपीरियंस कोचेस हैं। मतलब रिकी पॉन्टिंग उनके कोच हैं, सौरभ गांगुली उनके मेंटर है। और दूसरा चीज है कि दे हैव लॉट्स ऑफ गुड यंग प्लेयर्स। अगर आप देखिए तो जैसे कि कल के मैच में ऋषभ पंत का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। श्रेयस अय्यर अच्छा खेल रहे हैं। खैर कल तो उतना नहीं खेल पाए, लेकिन पृथ्वी शॉ बहुत अच्छे खेल रहे हैं। और पृथ्वी शॉ और धवन जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा चल रहा है उनके ओपनिंग के हिसाब से। जी। कल की बात करें, कल बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला होगा किंग्स 11 पंजाब से। रात 8 बजे ये मैच होगा। एक रिपोर्ट स्वाति की। अंक तालिका में आखिरी स्थान पर मौजूद विराट कोहली की टीम का एकमात्र लक्ष्य प्लेऑफ की आखिरी उम्मीदों को बरकरार रखना रहेगा। बेंगलुरु का आईपीएल के 12वें संस्करण में भी बाकी सत्रों की तरह ही हाल रहा है और वह तालिका में 10 मैचों में 3 जीत और 7 मैच हारने के बाद 6 अंक लेकर आखिरी स्थान पर है। मुकाबले में बने रहने के लिए उसे अपनी सभी मैचों को जीतना होगा। उधर पंजाब की टीम 5 जीत और 5 हार के बाद 10 अंक लेकर 5वें नंबर पर है। पंजाब की स्थिति भी अच्छी नहीं है और उसे भी प्लेऑफ में बने रहने के लिए अपने बाकी मैचों को जीतना जरूरी हो गया है। हालांकि रविचंद्रन अश्विन की कप्तानी में पंजाब ने उतार चढ़ाव के बावजूद बेहतर खेल दिखाया है और उम्मीद की जा सकती है कि वह बेंगलुरु को बराबरी की टक्कर दे सकेगी। बेंगलुरु के पास विराट, एबी डिविलियर्स, पार्थिव पटेल, मोइन अली जैसे बढ़िया बल्लेबाज हैं, लेकिन टीम ने पिछले मैचों में अच्छी गेंदबाजी भी की है, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। उधर डेल स्टेन के आने के बावजूद गेंदबाजी आरसीबी की कमजोर कड़ी बनी हुई है। बहरहाल दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ की तरफ कदम बढ़ाने के लिए यह मैच महत्वपूर्ण होगा। स्वाति रखेजा, स्पोर्ट्स डेस्क। और यदि देखा जाए व्हाट अबाउट आरसीबी, इसके लगता है कि स्टार्स ही जो है ना वो अनलकी हो रहे हैं। कितना भी स्कोर वो कर ले, डिफेंड नहीं कर पाते हैं। और अब दोनों का लगभग एक ही हाल है, किंग्स 11 पंजाब का भी और बेंगलुरु का भी। प्लेऑफ में अगर आपको बने रहना है, कदम बढ़ाना है, तो कल का मैच जीतना बहुत जरूरी होगा। हाँ, वो तो है। आरसीबी मतलब इतना स्ट्रॉन्ग टीम है, इतना एक्साइटिंग टीम है, जिसके पेपर्स अंदर में तो बहुत पेपर्स strong है। जिनके अंदर प्लेयर्स जैसे विराट कोहली जो कि आईपीएल के नंबर 1 प्लेयर हैं, एबी डिविलियर्स जो कि इतने मतलब लिमिटेड ओवर्स की किंग माना जाता है। लेकिन और जो बैंगलोर के ग्राउंड है वो थोड़ा छोटा भी है, उसमें रन भी अच्छा बनता है, लेकिन फिर भी समहाउ उनके बॉलिंग डिपार्टमेंट में मेरे ख्याल कुछ कमी रह गया है। they are not being able to restrict their opponents perhaps properly. जी। अब बैंकॉक की ओर रुख करते हैं, जहां एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप चल रही है। शिव थापा, आशीष कुमार, एल सरिता देवी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। भारत के लिए पदक भी पक्के हो गए हैं। 60 किलोग्राम वर्ग में एल सरिता देवी सेमीफाइनल में पहुंची और लगभग 10 साल बाद हम कह सकते हैं कि वो सेमीफाइनल में पहुंची हैं। इसके अलावा विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था शिव थापा ने। लाइट वेट 60 kg वर्ग में थाईलैंड के रुजाकन जुंत्रोंग को 5-0 से हराया सेमीफाइनल में, लेकिन एक कड़ी चुनौती होगी क्योंकि कजाकिस्तान के जाकिर सफीउल्लाह उनके सामने होंगे। हाँ, वो तो है, लेकिन मेरे ख्याल से ये वुमेन्स में जो आपके सरिता देवी ने से पहुंची हैं, ये भी बहुत अच्छे, क्योंकि ये वुमेन्स टीम काफी दिन बाद जा रहे हैं, जो कि विदाउट एमसी मेरिकम टीम गए हैं। और उनके कोच भी यंग कोच है जो कि आली कुमार, और काफ़ी यंग लड़कियों को लेके गए हैं। तो इसमें अगर अच्छा रिजल्ट आया तो वो बहुत बड़ा होप होगा हमारे लिए, क्योंकि 1 साल बाद ये सब
कुछ लोगों हाँ, का तो मतलब एज थोड़ा सा जो भी है यंगस्टर आपको ज्यादा चाहिए इसी टाइम। और शिवा थापा जब तक है, शिवा थापा और एक वन मोर इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन उनसे तो हु इज हमेशा ही वेरी उम्मीदें देखा जाए तो वेरी हमेशा ही रहती कंसिस्टेंट। है। ही इज यंग बट बहुत कम उम्र में आए थे। अब देखिए जब वो बहुत 2012 में यंग थे जब ओलंपिक हमने गए मैच थे, अभी भी अगर याद ताजा हो जाती है 2012 देखा ओलंपिक था। में यंगेस्ट इंडियन क्वालिफाई किए थे, जी। लेकिन उनके परफॉर्मेंस काफी अच्छा चल रहा है। जी। एथलेटिक्स चल रही है दोहा में, जहां दूसरे दिन कल गोमती मारीमातू ने महिलाओं की 800 मीटर दौड़ और तेजिंदर पाल सिंह तूर ने गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीते। कल भारत ने कुल 5 पदक अपनी झोली में डाले। 800 मीटर दौड़ में गोमती ने 2 मिनट 2.7 सेकंड का समय निकाला, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। पुरुषों के गोला फेंक में तूर ने पहले ही दौर में 20.22 मीटर का प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता। हालांकि उनका बेस्ट नहीं था क्योंकि इससे ज्यादा वो फेंक चुके हैं। शिवपाल ने पुरुषों के भाला फेंक में रजत पदक हासिल किया। 5 पदक के साथ कुल पदकों की संख्या हमारी 10 हो गई है। 2 स्वर्ण 3 रजत 5 जो है हमारे पास कांस्य पदक है। दोनों का ही अगर देखा जाए कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। हाँ, टूर के अगर वो जो तेजिंदर पाल सिंह के आप देखें तो ये तो एक पोएटिक जस्टिस है, क्योंकि पिछले बार जब एशियन चैंपियनशिप हुआ था वो भुवनेश्वर के अंदर हुआ था, आपको याद होगा। एंड ही वन द सिल्वर मेडल एंड ही लॉस्ट द गोल्ड आई थिंक बाय 0.03 मीटर्स और समथिंग लाइक दैट। तो इसमें मतलब लगा था कि वो, क्योंकि वो एशियन गेम्स में गोल्ड जीते थे, हमको लगा था वो मतलब वही गोल्ड जीतेंगे, लेकिन ये परफॉर्मेंस वही मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट पोएटिक जस्टिस है उनके लिए। और एशिया ही बैडमिंटन चैंपियनशिप चल रही है, चीन के वुहान में आज से शुरू हुई। हालांकि आज मिक्स डबल्स हुए, कल से होंगे सिंगल्स मुकाबले। एक रिपोर्ट। भारत 54 वर्ष के बाद चैंपियनशिप जीतने का प्रयास करेगा। इससे पहले 1965 में भारत के दिनेश खन्ना ने इस प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता था। पिछले वर्ष साइना और एच एस प्रणय ने कांस्य पदक हासिल किए थे। इससे पहले साइना ने 2010 और 2016 में कांस्य पदक जीता था, जबकि सिंधु ने 2014 में दक्षिण कोरिया में हुए टूर्नामेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया था। भारतीय खिलाड़ियों के लिए सिरदर्द बनी ताई जू यिंग ने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। हालांकि सिंधु और साइना को अकाने यामागुची, चेन यूफुई, राचानोक इंतानोन और दूसरे खिलाड़ियों की कड़ी चुनौती से पार पाना होगा। सिंधु सिंगापुर ओपन के सेमीफाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा से हार गई थी। राष्ट्रमंडल खेलों की 2 बार की स्वर्ण पदक विजेता साइना को भी इस खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में हराया था। दिसंबर में विश्व टूर फाइनल्स की विजेता बनी सिंधु इस टूर्नामेंट के जरिए सत्र का पहला खिताब जीतना चाहेंगी। पहले दौर में उनका सामना जापान की सायाका ताकाहाशी से होगा। सिंधु अगर सायाका की चुनौती से पार पाने में सफल रहती हैं, तो दूसरे दौर में उनका सामना मलेशिया ओपन में साइना को हराने वाली पोर्नपावी चोचुवोंग से होगा। इस सत्र में खिताब जीतने वाली एकमात्र भारतीय साइना नेहवाल को टूर्नामेंट में 7वीं वरीयता मिली है। वो चीन की हानिये के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेंगी, जबकि क्वार्टर फाइनल में उनका सामना यामागुची से हो सकता है। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने पिछले कुछ सप्ताह में इंडिया ओपन में फाइनल के बाद 2 टूर्नामेंटों के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर फॉर्म में आने का संकेत दिया। पहले दौर में उनका मुकाबला इंडोनेशिया के शेसर हिरेन रस्टनावितो से होगा। समीर वर्मा जापान के काजुमासा सकाई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। इसमें देखा जाए जयदीप, 54 वर्ष बाद लगभग हम चाहेंगे कि कोई खिताब मतलब गोल्ड मेडल मिले। इससे पहले 1965 दिनेश खन्ना ने इस प्रतियोगिता का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता था। साइना, सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, अच्छे अच्छे हमारे खिलाड़ी गए हैं। कुछ उम्मीद लगती है? देखिए, उम्मीद तो ऑलवेज है, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि एशियन चैंपियनशिप जो है बहुत ही टफ होते हैं। हाँ, क्योंकि सारे वर्ल्ड के प्लेयर्स पावर तो बैडमिंटन का ही है। हाँ, तो उसमें चाइना भी है, जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, सब है। तो इसमें अगर कोई गोल्ड जीत के आते हैं मतलब तो नथिंग लाइक इट, लेकिन आपके तो टॉप प्लेयर्स आपने भेजे हैं और जिनको आप भेजे हैं सब गोल्ड जीतने की लायक है, ऐसा नहीं है। दे आर केपेबल ऑफ विनिंग गोल्ड। हाँ, बट कंपटीशन इज वेरी टफ, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। जी। और पेचिंग में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में अपूर्वी चंदेला, अंजुम मुदगिल फाइनल में पहुंचकर पदक जीतने से चूक गई हैं। फाइनल में अपूर्वी 0.18 अंक लेकर चौथे स्थान पर रहीं। पहले दिन महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शानदार स्कोर के साथ दोनों निशानेबाजों ने फाइनल में जगह जरूर पक्की की थी, लेकिन बाद में उस प्रदर्शन को वो जारी नहीं रख पाई। यहाँ भी अगर देखा जाए तो भारतीय निशानेबाजों की नजरें जो है वो टोक्यो ओलंपिक कोटे पे ही हैं कि यहाँ से लेके और वहाँ स्थान पक्का करें। हाँ, वो तो है ही है,
जी, कुछ यहाँ लगता है, हालांकि इधर दोनों हार गई हैं, लेकिन अभी और कुछ तो बचे हैं, तो कुछ उम्मीद यहाँ से लगता है कि कल 2 स्पर्धाओं का फाइनल है, जिसमें महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और पुरुषों का 15 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन का फाइनल होगा। हर ओलंपिक में लगता है हमको कुछ एक मेडल तो आएगा, लेकिन इस डिसिप्लिन में नहीं आ रहा है। जी। चलते चलते एक और खबर, भारत के क्वालिफायर खिलाड़ी सुदीप्ता मुखर्जी ने बुडापेस्ट में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जर्मनी की सबीने विंटर को 4-3 से हराया। एक उलटफेर किया, क्योंकि ये 502वें स्थान पर हैं और उनके 58th रैंकिंग है। तो टेबल टेनिस की एक अच्छी खबर, एक अपसेट जरूर रहा ये। Certainly it is. और राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता मनिका ने सर्बिया के आंद्रे तोद्रोविच को 14-12, 11-5, 11-5, 11-8 से हराया। अब समय नहीं है किसी और खबर पर चर्चा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयदीप। शुभ रात्रि। Thank you so much. नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत लोकसभा की 116 सीटों के लिए सामान्य से लेकर अधिक मतदान। चौथे चरण के लिए प्रचार तेज, छठे चरण के लिए नामांकन भरने का समय समाप्त। उच्चतम न्यायालय ने राफाल मामले में टिप्पणी पर राहुल गांधी को अवमानना नोटिस जारी किया। श्रीलंका में सरकार ने स्वीकार किया, समय पर कार्रवाई होती तो रविवार के हमलों से बचा जा सकता था। चीन में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक जीता। शिव थापा और एल सरिता देवी बैंकॉक में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 116 सीटों के लिए सामान्य से लेकर अधिक मतदान हुआ है। केरल में 7 बजे तक 74% से अधिक मतदान रिकॉर्ड किया गया। चुनाव प्रक्रिया और ईवीएम में खराबी आने के कारण कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान देरी से शुरू हुआ। वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में 80% से अधिक मतदान की खबर है। इस क्षेत्र से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश में आज 10 संसदीय क्षेत्रों में करीब 60.52% मतदान हुआ, जो 2014 की तुलना में 1% कम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। ईवीएम में गड़बड़ी की कुछ घटनाओं के साथ ही 1-2 स्थानों पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच छिटपुट झड़प के अलावा तीसरे चरण का मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस बीच समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से रामपुर जिले में ईवीएम में गड़बड़ी और बदायूं में एक मंत्री के चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में तीसरे चरण में आज 5 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इन क्षेत्रों में औसतन 60% मतदान का अनुमान है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। आज के मतदान के बाद जिन उम्मीदवारों के राजनीतिक किस्मत का फैसला होगा, उनमें आरजेडी के शरद यादव, कांग्रेस की श्रीमती रंजीत रंजन और जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव प्रमुख हैं। लोजपा के महबूब अली कैसर और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी भी चुनाव मैदान में हैं। तीसरे चरण के चुनाव के बाद बिहार के 40 में से 14 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो गया। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से मैं कृष्ण कुमार लाल। कर्नाटक में लोकसभा के तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। कुल 237 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। गुलबर्गा से मल्लिकार्जुन खड़गे, उत्तरी कन्नड़ सीट से अनंत कुमार हेगड़े, बीजापुर से रमेश जिनागी और दावणगेरे से जीएम सिद्धेश्वर इनमें शामिल हैं। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन और बीजेपी के बीच कर्नाटक में हो रहे चुनावी जंग 2 चरणों के चुनाव के बाद आज संपन्न हुए। आज हुए मतदान में कुछ ईवीएम तकनीकी खराबी के कारण स्थगित होने और बीदर के पास सुल्तानपुर गांव में मतदाताओं ने चुनाव को बायकॉट करने की घटना को छोड़कर चुनाव काफी आराम से चले। गर्मी से बचने के लिए काफी मतदाता सुबह सुबह ही मतकेंद्र में दिखाई दिए, मगर उत्तर कन्नड़ा में मतदाताओं को भारी बारिश का सामना करना पड़ा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
इस बीच भाजपा ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी के यहां शिकायत दर्ज कराई है। श्री खड़गे पर अपनी पत्नी के साथ बैलेट यूनिट घेरे में प्रवेश कर एक साथ वोट डालने का आरोप है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के तीसरे और अंतिम चरण में 7 निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 67.25% मतदान दर्ज हुआ। कुल 123 उम्मीदवारों का चुनावी भविष्य ईवीएम में बंद हो गया। मतदान शांतिपूर्ण रहा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 5 संसदीय क्षेत्रों में कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। शाम 6 बजे तक 85% मतदान रिकॉर्ड किया गया। ओडिशा में तीसरे चरण में 5 बजे तक औसतन 61% मतदान की खबर है। त्रिपुरा में लोकसभा की एक सीट त्रिपुरा पूर्व का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीराम तारानीकांति ने अगरतला में मीडिया को बताया कि शाम 6:30 बजे तक 80% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आम चुनाव से संबंधित विशेष चर्चा जनादेश 2019 प्रसारित कर रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रतिदिन शाम 4:05 से 4:30 तक सुना जा सकता है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 7 राज्यों के 71 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। इन क्षेत्रों में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण के चुनाव के लिए नाम वापस लेने का कल आखिरी दिन है। 7 राज्यों के 51 निर्वाचन क्षेत्रों में इस चरण के अंतर्गत अगले महीने की 6 तारीख को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव देश भर में 7 चरणों में हो रहे हैं। मतगणना 23 मई को होगी। 5वें चरण में 7 राज्यों से लोकसभा की 51 सीटों के लिए 6 मई को मतदान कराया जाएगा। इस बीच लोकसभा के 6ठे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। 26 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस चरण में 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों के लिए 12 मई को मतदान होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन सत्ता में आया तो गरीबों का मुफ्त इलाज कराने की आयुष्मान भारत योजना पश्चिम बंगाल में भी लागू की जाएगी, जिसका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरोध करती आई हैं। आसनसोल में एक जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि राज्य में घुसपैठ पर आधारित राजनीति से भी सही तरीके से निपटा जाएगा। वो बेटे जो पहली बार लोकसभा के लिए मतदान करने वाले हैं, वो पश्चिम बंगाल में नई राजनीति की शुरुआत करने वाले हैं। हिंसा, आतंक, घुसपैठ, तस्करी की राजनीतिक विरासत के साथ वो नहीं रहना चाहते। उनको नया हिंदुस्तान चाहिए। उनको एक ऐसा पश्चिम बंगाल चाहिए जो विकास की पंचधारा से आगे बढ़े। सुश्री ममता बनर्जी ने भी आज हुगली जिले में कई रैलियां की और प्रधानमंत्री की आलोचना की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर आलोचना की है और दावा किया है कि 12 वर्ष के बच्चे को भी नोटबंदी से हुए नुकसान का एहसास है। आज मध्य प्रदेश में शहडोल के लालपुर क्षेत्र में एक चुनाव रैली में श्री गांधी ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी न्याय योजना के तहत 50 लाख परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देगी। श्री गांधी ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का भी वायदा किया। हमने निर्णय लिया है 2019 के चुनाव के एकदम बाद कानून बदला जाएगा। हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं जा पाएगा। हिंदुस्तान की सरकार के 22 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। 1 साल के अंदर 22 लाख युवाओं को हम वो नौकरियां दिलवा देंगे। हम 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिलवा देंगे।
उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल अब चौथे चरण के प्रचार में जुट गए हैं। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और प्रचार भी किया। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आज हरदोई जिले में रैली की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महोबा, कानपुर देहात और जालौन जिलों में चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस के एक शिष्टमंडल ने आज निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने गुजरात में आज वोट डालने के बाद रोड शो कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। श्री सिंघवी ने यह भी आरोप लगाया कि कल पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में चुनाव प्रचार के दौरान श्री अमित शाह ने अपने भाषण में सशस्त्र सेना का आह्वान करते हुए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने के अंतिम दिन आज भाजपा के 4 और कांग्रेस के 7 उम्मीदवारों सहित कई प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। मैं बचपन से ही देख नहीं सकता, लेकिन दोस्तों के साथ होने से अखबार से लेकर आसपास की हर खबर से वाकिफ रहता हूँ। मेरे कंप्यूटर और फोन भी बोल सकते हैं। इन सब ने मिलकर मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है और अब तो मैं देश को भी दिशा दिखा सकता हूँ। पूछिए कैसे? अपना वोट डालकर, क्योंकि मुझे पता है इस बार मतदान केंद्र में होंगी मेरे लिए विशेष सुविधाएं। इस बार मतदान केंद्र में होंगे व्हील चेयर्स, रैम्प्स, ब्रेल ईवीएम्स, स्पेशल वॉलंटियर्स और कई खास इंतजाम। मन बनाइए, आगे आइए, वोट कीजिए। अधिक जानकारी के लिए वोटर हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। उच्चतम न्यायालय ने राफाल मामले में टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। इससे पहले न्यायालय ने कहा था कि उसकी बात को गलत ढंग से उद्धृत किया गया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज कहा कि इस बारे में भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की याचिका पर सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष की अपील नामंजूर कर दी, जिसमें उन्होंने मीनाक्षी लेखी की याचिका को खारिज करने की मांग की थी। दिल्ली की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में पेश नहीं होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव के नाम गैर जमानती वारंट जारी किया है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 2013 में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। श्रीलंका सरकार ने कहा है कि देश में गिरजाघरों और होटलों में रविवार के हमले कुछ समय पूर्व न्यूजीलैंड में मस्जिद में मुसलमानों की हत्या का बदला लेने के लिए किए गए। संसद में विशेष बयान में रक्षा मंत्री रुवान विजयवर्धना ने बताया कि इस संबंध में मिली जानकारी की छानबीन की जा रही है। इन हमलों में 38 विदेशियों सहित 321 लोग मारे गए थे। रविवार हमलों के बाद श्रीलंका में तनाव की स्थिति बनी हुई है और किसी नए हमलों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। रात्रि कर्फ्यू जारी है और स्कूल कॉलेजों को पूरे सप्ताह के लिए बंद रखा गया है। प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने माना कि जनजीवन सामान्य होने में कुछ वक्त लग सकता है। उन्होंने इस्लामिक संगठन ISIS के हमले की जिम्मेवारी लेने के बारे में कहा कि पुलिस को उसका शक था और इस बारे में छानबीन जारी है। श्री विक्रमसिंघे ने कहा कि घटना के पीछे सभी गिरफ्तारियां स्थानीय लोगों की हुई हैं, लेकिन इनमें कईयों के तार विदेशों से जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से संतोष कुमार। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। चीन में एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में आज भारत को 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक मिला। बजरंग पूनिया ने कजाकिस्तान के सयातबेक ओकासोव को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। प्रवीण राणा बहमन मोहम्मद तैमूरी से 0-3 से हार गए, उन्हें रजत पदक मिला। सत्यव्रत कादियान ने चीन के हाओबिन गाओ को 8-2 से हराकर कांस्य पदक जीता। बैंकॉक में शिव थापा और एल सरिता देवी ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए 2 और पदक पक्के कर लिए हैं। शिव थापा ने एक तरफा मुकाबले में थाईलैंड के रुजाकर्न जुनत्रोंगो को 5-0 से हराया।
महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में एल सरिता देवी ने कजाकिस्तान की रिम्मा वोलोसेनको को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद ने ताज़ा समाचार मिलने तक 12 ओवर में 1 विकेट पर 108 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे और सनराइजर्स हैदराबाद चौथे नंबर पर है। संयुक्त अरब अमारात की राजधानी अबू धाबी में 29वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में कल दुनिया के 50 देशों के 1000 से अधिक पुस्तक प्रकाशकों और विक्रेताओं के हिस्सा लेने की आशा है। भारत को इस मेले में सम्मानित अतिथि का दर्जा दिया गया है। पुस्तक मेला 30 अप्रैल तक चलेगा और इसमें करीब 5 लाख पुस्तकें प्रदर्शित की जाएंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत लोकसभा की 116 सीटों के लिए सामान्य से लेकर अधिक मतदान हुआ है। चौथे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। छठे चरण के लिए नामांकन भरने का समय समाप्त हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने राफाल मामले में टिप्पणी पर राहुल गांधी को अवमानना नोटिस जारी किया है। श्रीलंका में सरकार ने स्वीकार किया कि समय पर कार्रवाई होती तो रविवार के हमलों से बचा जा सकता था। चीन में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक जीत लिया है और शिव थापा और एल सरिता देवी बैंकॉक में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Good evening, this is All India Radio and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Moderate to high voter turnout recorded for 116 parliamentary constituencies and the third phase of Lok Sabha elections. Campaigning gains momentum for fourth phase. Filing of nominations for sixth phase ends. Supreme Court issues contempt notice to Rahul Gandhi for his remarks on Rafale judgment. Sri Lankan government accepts that Sunday attacks could have been prevented by timely action. In sports, Bajrang Punia wins gold in Asian Wrestling Championships at Xi'an in China. Shiva Thapa and L Sarita Devi enter semi-finals of the Asian Boxing Championships in Bangkok. .66% polling has been recorded in the third phase of Lok Sabha elections today. Briefing media in New Delhi this evening, Senior Deputy Election Commissioner Umesh Sinha said, except minor incident, polling remained peaceful in this phase in 116 constituencies and Anantnag district of Anantnag Lok Sabha constituency. Till now, what we have, the information is 66% turnout. The polling was largely peaceful except minor incidents in some of the places. The third phase was heaviest in terms of the parliamentary constituencies going to poll. Mr. Sinha said out of 543 Lok Sabha constituencies, polls concluded in 303 constituency. Mr. Sinha said people came out in large numbers to exercise their rights to franchise. Tripura recorded highest 79.64% voting, followed by West Bengal 78.97%. Assam recorded 74.05%, Kerala 73.06%, Daman and Diu 73%, Dadra and Nagar Haveli 71.43%, Goa 70.90%, Chhattisgarh 64.02%, Karnataka 60.42%, Gujarat 59%, Bihar 60%, Maharashtra 62%, Uttar Pradesh 60.52%, and in Jammu and Kashmir 12.86% voting was recorded. 64% polling was recorded for both Lok Sabha and Assembly elections in Odisha as elections were held simultaneously there. Election Commission has seized unaccounted cash, illicit liquor, drugs, gold and freebies worth over 3,126 crore rupees since the Model Code of Conduct came into effect. The prominent candidates in the fray in this phase include BJP President Amit Shah from Gandhinagar, Congress Chief Rahul Gandhi from Wayanad, Samajwadi Party Leader Mulayam Singh Yadav from Mainpuri, BJP's Varun Gandhi and Jayapradha, Azam Khan of Samajwadi Party, PDP President Mehbooba Mufti from Anantnag,
and NCP Chief Sharad Pawar's daughter, Supriya Sule from Baramati. In Gujarat, 371 candidates are in the fray for Lok Sabha elections. More from a correspondent. Polling for 26 Lok Sabha seats in Gujarat and 2 seats of union territories of neighbouring Daman, Diu and Dadra and Nagar Haveli remained peaceful. Youth, particularly the first-time voters, have participated in the voting very enthusiastically. Divyangs and senior citizens also participated in large numbers following special facilities set up by Election Commission. With today's polling, the fate of 371 candidates, including BJP President Amit Shah, has been locked in EVMs. Yogesh Pandya, AR News, Ahmedabad. In Kerala, voting continued late in the night in some constituencies due to delay in the process and EVM glitches. A report. Heavy polling recorded in Kerala and barring few stray incidents, polling was peaceful. People in large numbers, especially women, senior citizens and first-time voters, queued up at different polling stations since early morning. Due to delay in voting and faulty EVM, election authorities allowed all those who entered the polling station compound till 6 p.m. to cast vote. Meanwhile, in Birikulam polling station, Kasaragod, voting was temporarily suspended due to heavy rain. Shamila, AR News, Thiruvananthapuram. In Karnataka, there are 237 candidates in fray and prominent among them are Mallikarjun Kharge, Anand Kumar Hegre, Ramesh Jigajinagi and GM Siddeshwara. Our correspondent has filed this report. A bipolar contest between the ruling Congress, JDS combined and the BJP concluded in Karnataka with the voting in all the 28 parliamentary constituencies ending in 2 phases. Apart from a few incidents of EVM malfunction and election boycott by Sultanpur village near Bidar town, no other hiccups were seen today. The 14 constituencies that went to poll today in North Karnataka saw some brisk voting since morning. Queues were seen as the voting began with many arriving to vote early in the day to avoid the summer heat. In Uttar Kannada, however, people had to put up with lashing rain. Sudhindra, AIR News, Bengaluru. In Uttar Pradesh, polling on 10 seats of third phase completed peacefully. More from a correspondent. Barring some incidents of glitches in EVMs and a scuffle between workers of different political parties at few places, overall polling was peaceful in third phase. Heavy security arrangements were in place on more than 20,000 polling booths. Many high-profile leaders also cast their vote. Meanwhile, Samajwadi Party complained to Election Commission regarding malfunctioning of EVMs in Rampur and alleged that a state minister tried to influence polling in Madayu. Sushil Chandra Tiwari, AIR News, Lucknow. Meanwhile, the filing of nominations for the 6th phase elections ended today. Electioneering is gaining momentum for the remaining phases. Top leaders of various political parties are addressing rallies across the country. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi addressed rallies at Kendrapara and Balasore in Odisha. He said not a single charge of corruption has surfaced against the BJP-led government in the last 5 years, and those who have been levelling false allegations have found themselves in the dock. Mr. Modi said the NDA government is utilizing the technology to ensure that benefits of development reach the poor people of the country. BJD President and Chief Minister Naveen Patnaik also addressed public meetings at different places in Cuttack and Bhadrak districts today. He urged the people to not to be confused by propaganda of other parties. Addressing an election rally at Asansol in West Bengal this afternoon, Mr. Modi said Centre will implement Ayushman Bharat scheme for free treatment of poor in West Bengal if voted to power, which is opposed by the Chief Minister Mamata Banerjee. He also asserted that the politics centering infiltration in the state will also be dealt with properly. वो बेटे बेटी जो पहली बार लोकसभा के लिए मतदान करने वाले हैं, वो पश्चिम बंगाल में नई राजनीति की शुरुआत करने वाले हैं। हिंसा, आतंक, घुसपैठ, तस्करी की राजनीतिक विरासत के साथ वो नहीं रहना चाहते। उनको नया हिंदुस्तान चाहिए। उनको एक ऐसा पश्चिम बंगाल चाहिए जो विकास की पंचधारा से आगे बढ़े। Trinamool Congress chief Ms. Banerjee criticized the Prime Minister at different rallies in Hooghly district today. Congress President Rahul Gandhi addressed rallies at Dungarpur in Rajasthan and Shahdol district in Madhya Pradesh. He said if voted to power, the party will give government jobs to 22 lakh people in the next 1 year. हमने निर्णय लिया है 2019 के चुनाव के एकदम बाद कानून बदला जाएगा। हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं जा पाएगा। हिंदुस्तान की सरकार के 22 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। 1 साल के अंदर 22 लाख युवाओं को
हम वो नौकरियां दिलवा देंगे। हम 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिलवा देंगे। The Supreme Court has issued a contempt notice to Congress President Rahul Gandhi for his remarks on Prime Minister Narendra Modi regarding the Rafale judgment. The court had earlier said the remarks were incorrectly attributed to it. A bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi today said it will hear the criminal contempt petition filed by BJP MP Meenakshi Lekhi against Mr. Gandhi on the 30th of this month, along with the pending review petition against its December last year's verdict in the Rafale jet deal. The court rejected the Congress president's plea to close the criminal contempt petition filed by Ms. Lekhi. This is All India Radio giving you the news. For quick news updates, follow us on Twitter at AIR News Alerts. News Services Division of All India Radio is broadcasting a special live program, Janadesh 2019, on the developments related to the general elections 2019. Tune in to the FM Gold channel of AIR from 4:05 p.m. to 4:30 p.m. every day till the announcement of results to listen to this special program. Sri Lanka remains on alert as the government accepted that Sunday attacks could have been prevented had they acted on the intelligence available. Prime Minister Ranil Wickremesinghe today said some people are on the run and security forces are trying to prevent further attacks. He accepted that India has shared specific intelligence about the attacks and there's strong cooperation between the two countries on terrorism. The Prime Minister said that there are foreign links behind the attacks and investigations are on to probe IS links. Our correspondent has filed this report. Security situation remains fragile in Sri Lanka as there are inputs of some people on the run trying to organize further attacks. Prime Minister accepted that it will take a bit of time for normalcy to return. He said there are foreign links and they are looking into claims of ISIS for the attack. Mr. Wickremesinghe asserted that Sri Lanka has entered into an era of global terror network and several countries have come forward to extend help for investigations. Opposition leader Mahinda Rajapaksa criticized government for failing to act on intelligence inputs. Meanwhile, death toll has gone up to 321, including 34 foreigners. 10 of them are Indians. Santosh Kumar for AIR News from Colombo. India is adequately prepared to deal with the impact of the US decision to end exemptions from sanctions for countries still buying oil from Iran. External Affairs Ministry spokesperson Ravish Kumar said in New Delhi that India will continue to work with partner nations, including with the US, to find all possible ways to protect India's energy and economic security interests. The 29th edition of the Abu Dhabi International Book Fair is all set to receive more than 1,000 exhibitors from 50 countries on Wednesday. India has been nominated as a guest of honor country at the book fair. The fair will be held in the UAE capital from 24th to the 30th of this month. More from our correspondent. The India Pavilion at the Abu Dhabi International Book Fair is gearing up to showcase the literary and the cultural mosaic of the Indian subcontinent. Navdeep Singh Suri, Indian ambassador to the UAE, stated that India being selected as the guest of honor at the book fair reflects the strong relations between the leaderships and the people of the UAE and India. A special presentation shall be made by the Publications Division on the 100-volume series of the collected works of Mahatma Gandhi as part of the 150th birth anniversary celebrations. Kanchan Prasad, AIR News, Abu Dhabi. In sports news, in the Asian Wrestling Championship, India clinched 1 gold, 1 silver and a bronze at Xi'an in China today. World number 1 Bajrang Punia logged 10 points in a row in the gold medal bout to reclaim his Asian Championship crown. He defeated Kazakhstan's Sayedbek Okasov 12-7 in a nail-biting 65kg men's freestyle final. It is Bajrang's second gold at this championship, having won one in 2017. Another Indian, Praveen Rana, lost to Bahman Mohammad Taimuri of Iran in the final 0-3 in the 79kg category, securing a silver medal. In the 97kg category, Satyabrat Kadian picked a bronze medal, defeating Haobin Gao of China by 8-2. Shiva Thapa 60kg and veteran L. Sarita Devi 60kg have entered the semi-finals at the Asian Boxing Championships in Bangkok today. In all, 8 Indian boxers, 4 women and 4 men, advanced to the medal rounds on day 2 of the quarterfinals. The 25-year-old Thapa defeated Thailand's
Ruzakran Juntrong in a one-sided lightweight contest 5-0. In the women's draw, former world champion Sarita defeated Kazakhstan's Rima Volosenko in a split decision to advance. In IPL cricket, Chennai Super Kings have won the toss and elected to field against Sunrisers Hyderabad in a match underway in Chennai now. Sunrisers were 138 for 2 in 16 overs when reports last came in. Defending champions CSK are currently second in the 8-team points table behind Delhi Capitals. Both teams have 14 points each, but Delhi is at the top due to a better net run rate. Sunrisers Hyderabad is fourth with 10 points from 9 matches, and they are behind third place Mumbai Indians, who have 12 points from 10 games. And now, before we wrap up the bulletin, the headlines once again. Moderate to high voter turnout recorded for 116 parliamentary constituencies and a third phase of Lok Sabha elections. Campaigning gains momentum for fourth phase. Filing of nominations for sixth phase ends. Supreme Court issues contempt notice to Rahul Gandhi for his remarks on Rafale judgment. Sri Lankan government accepts that Sunday attacks could have been prevented by timely action. In sports, Bajrang Punia wins gold in the Asian Wrestling Championships at Xi'an in China. Shiba Thapa and L. Sarita Devi enter semi-finals of the Asian Boxing Championships in Bangkok. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.nic.in. And that is all in the news at 9. Good night. सूरज की खिलती पहली किरण के साथ आकाशवाणी अपने एक और नए अंदाज में दे रही है आवाज। डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम सेवा पर आप सभी का स्वागत है। भक्ति संगीत, प्रादेशिक संगीत, विविध भारती एफएम के कार्यक्रम, प्रादेशिक समाचार और देश विदेश के समाचारों का भरपूर आनंद डीटीएच सेवा के संग। देश के किसी भी कोने में रहते हो आप, अपने ही राज्य से उस कोने में भी डीटीएच के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप। बस डीटीएच सेवा का उठाएं लाभ। आपकी हर सांस के साथ साथ डीटीएच सेवा 24 घंटे रहे आपके पास। डिजिटल क्वालिटी का ऐसा सुंदर प्रसारण और कहां, डीटीएच सेवा है जहां। This is All India Radio. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on US to end sanctions exemptions on Iran oil imports. The participants are A.K. Bhattacharya, economic analyst, and Vinay Pandey, journalist. In November last year, the United States had announced sanctions on Iran, asking countries to stop importing oil from the country in a bid to put pressure on the country to roll back its nuclear program. At that time, it had given a 6-month waiver to some of the big importers of Iranian oil like India, Turkey, South Korea and China also, and that waiver was to expire on May 2. There was expectation that this would be extended with a lower amount of imports, but that has not happened, and we are going to have that waivers expiring. That means these countries, if they import oil from Iran, run the risk of facing sanctions from the US. Its financial institutions will not be able to access the US financial institutions. Now, already in anticipation of this, the crude oil has run up. It's nearing $20.75 a barrel. A.K. Bhattacharya. A.K.B., to begin with, first thing I would like to ask you is there a still chance that the US may relent a bit and allow these countries to import oil at a slightly lesser rate so that the transition is smooth, seeing that crude oil prices have run up? Well, nothing can be ruled out, but it seems that the manner in which the announcement came would suggest that the denial of waiver is now serious and here to stay, because they have clubbed countries like China and India in the same basket. So if India had been treated differently, I would have said that yes, there is some scope for some negotiation, consultation. So therefore, I feel that India must try to negotiate hard with the US
But then India is in right now election mode. There is a government in place, but the government is not really, I would say, fully functional in that sense. So it is at this critical juncture that this 2nd May waiver extension issue have come up. So therefore, I am not too hopeful that India will escape from the denial of waiver clause from the US as far as Iran's oil supplies are concerned. So at least till the new government is formed, I would imagine India has to weather the storm, so to say. And it will mean hardships because international crude oil prices have already gone up, as you rightly pointed out. Iran is the world's 6th largest producer of oil. If Iran supply is not going to be available to many of its consumers like China, like India, so there is a global shortfall in the availability of crude oil. The OPEC, which accounts for around over 40% of the global supplies, is already not very keen to increase its output. There is a problem with Venezuela. So the overall availability of crude oil in the world is not very, very good. So therefore, it has come at a time which will be hard for India. And one final point I would like to make is that India has been importing around 23 million tons of crude oil from Iran. Now, India's total annual import requirement is around 220 to 25 million tons of crude oil. Now, it's almost around 10 to 11% of total imports that India makes annually comes from Iran. And suddenly, Iran goes out of the scene. So it will mean 11%, a tenth of India's imports have to be met through other sources. So from the oil security point of view, this is going to be a major challenge and a big headache for whichever government comes to power after 23rd of May. I just want to list some numbers for the benefit of our listeners. Our crude oil imports last year were $141 billion, which is about 27% of our total imports of $507 billion. And more importantly, these rose 30% last year. We are already seeing prices have strengthened to up to $75 a barrel. There is a policy calculation that India can maybe weather up to $80 a barrel, but beyond that, it gets difficult for us in terms of our current account deficit starts to deteriorate, it starts to impact our fiscal deficit and eventually inflation. And the whole macroeconomic balance that has improved through softer crude gets upset. Do you think things can really get that worse before we find solution to this issue, or the softness in global demand will ensure that global growth will ensure that the situation doesn't become so alarming, but at least it will be difficult for us? The situation will not be so alarming as we saw two years ago when the crude oil prices went up to as much as $150, $160 a barrel. I don't see the crude oil going beyond 80, 75 or 80. It's already reached 75, so maybe 80, because you have the US shale, which is believed to become viable the moment the crude oil prices go above $75 a barrel. So I don't see that we are going to see a long period when Indian economy will have to have the adverse impact of high crude oil price. But certainly any crude oil price which is more than $65 a barrel will have an impact on India's macroeconomic balance. If the crude oil prices go up by $1 a barrel, then its immediate impact on our trade deficit is around $1.5 billion. So that is the simple calculation. Then you can imagine that if prices have already gone up by around a couple of dollars per barrel already, now its impact will be bad, and our exports have not been doing very well, although the March figure shows that it went up almost by 10% compared to the previous year, same period. But we have to look for newer sources of supplies. Iran also offers us some benefits, like it offers a 60-day credit. And the quality of the Iranian crude oil is suitable for many of our refineries. So therefore, denial of Iranian crude oil will also be a financial setback of sorts, where our Indian refineries who had a better cushion in terms of payment mechanisms will have to look for supplies. Either they have to go to the US, they may have to lean on UAE and Saudi Arabia, but they go for the spot crude oil prices which are rising. In the earlier episodes of such sanctions, we had worked out a rupee payment mechanism with Iran through UCO Bank, if I remember. Now, looking at the
sternness of US's message this time, that mechanism, it does not seem likely that India will be able to use that mechanism and US will turn and allow it to happen. So what do you think, that we now have to prepare for stopping Iranian crude imports? You know, my sense is that our relations to the US have suddenly come unstuck, not just on the Iran oil issue, but also on another issue on GSP. Now, remember that the 2nd May is the deadline for the Iran oil waiver ending, and on 4th of May, the GSP preferences treatment to India's exports to the US will come to an end. And all this is happening when India is in election mode. So our negotiating lever, is not very strong with the US right now. So therefore, we have to wait till the elections and the new government is in place, and then to see how the new government actually deals with this situation. Till that time, I think the economy will have to weather the storm of higher crude oil prices, supply disruptions. If Indian diplomats try hard, maybe they can seek a month or a 2 months waiver, extension to the waiver. But given the list of countries that have been named, because some countries like Italy and Turkey, they've already stopped importing it from Iranian crude oil. So suddenly India and China, they are already singled out. I think Taiwan, Italy and Turkey have already stopped buying from Iran. So US has a bargaining position telling the Indians that listen, and the Chinese, listen, you didn't listen. Others have listened to our waiver, so you face the consequences. So I think we are heading for a temporary disruption of sorts, and let us hope for the best that after the new government is in place, this situation is sorted out. Stock market already seems to be rattled. We have seen the Sensex falls about 500 points over the last 2 days. But looking at the government response, it's said today that it is adequately prepared to deal with the situation without giving the details of what it has planned. Now, 2 things. One is that while Indian refineries were getting this crude from Iran, refineries are a lot more versatile than in South Korea, let's say. And they are able to process all kind of crude. So in that sense, we have a much wider basket to access than some of the other people who face the situation. Secondly, Saudi Arabia has said that it will try and keep the production up and there is no disturbance once this ban is in place. So do you think that offers us some respite, these things, and maybe the situation may not deteriorate? See, as I much? don't see any problem on the supply side. In a sense, the availability of crude oil to those who need it for processing and converting them into different petroleum products will not be an issue. The problem will be at what price you can buy them. Now, of course, the world's 6th largest producer of crude oil, that crude is not made available. The global crude production is around 4.3 billion tons. Now, India gets to 25 million tons out of that. Maybe India's share is very small. So, I don't think getting crude oil will be an issue, but getting it at what prices? Can you get it at $70, which you were getting till a few weeks ago? Or do you have to budget for $80 a barrel for the current year's remaining months financial year? And if that happens, it has an impact on your oil subsidies, it has an impact on the overall economic growth, it has an impact on your foreign trade situation because you need to export more, and finally it has an impact on your current account balance. So I think the macroeconomic challenge will get a little more difficult. So we have seen over multiple cycles that we are extremely vulnerable to the spike in crude prices. Our imports have gradually, because our production hasn't kept pace, you see Bombay High is declining year after year. So whenever prices turn adverse to us, we see our macroeconomic balances deteriorate sharply. Now, is there anything that can be done over the long term to address this issue? I mean, it is offered that renewables we are focusing in a big way. Shift to electrical vehicles is where coal resources come into play is another idea. So is it possible for us to gradually over a period of time at least take the incremental demand that is coming into the market? We have been a little slow in responding to the oil sector challenge. There is an old saying that you must fix the roof when it is not raining. Now, I think the oil prices remain very benign for several years, and I think we have not been very prompt in taking full advantage of that benign oil scenario and bring about necessary reforms in the entire energy sector. We have not really invested enough
with determination and commitment to give us boost to exploration activities. We haven't focused enough on the need for conservation. We have begun very well on alternative sources, renewable sources of energy, but I think time has come. We need to give greater impetus to that. And finally, on the pricing front, I still feel that we have not yet made our refineries as sensitive to the market principles of pricing crude oil for processing. So I think a host of reforms in the oil sector need to be undertaken. And when crude oil prices were low relatively, I don't think we were quick enough to take those decisions. Probably we can only hope now that when oil prices are still not that alarmingly high, but the Iran oil waiver issue should be kind of a wake-up call for us and for the new government to take necessary steps so that this doesn't continue to be a big challenge for sustained economic growth in this country. Thank you very much. Thank you. You were listening to a discussion on US to end sanctions exemptions on Iran oil imports. The participants were A.K. Bhattacharya, economic analyst, and Vinay Pandey, journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. This program is also available on our website newsonair.nic.in. You may email your opinion about this program at airnsttalks@gmail.com. by Sri Narendra Modi, and the nation has witnessed fruits of it, enjoying it. For example, you take any sector, for that matter, the connectivity of the national building of the national highways, from there to Ayushman Bharat, the Ujjwala scheme, which has benefited crores of people. 14 crore people, youth, have been benefited by Mudra loans in every aspect, including the space, the defense, and now, of all the top of it, the nation is feeling safe and secure when this government is committed to safeguard not only its boundaries, but the peaceful living of every citizen in this country. Such are the remarkable achievements. Based on that, we have been seeking the mandate once again
and we are sure that the nation will once again vote for BJP and make Narendra Modi the Prime Minister of this country once again. The BJP has also earmarked or set the targets for itself, like by 2022, which is the 75th anniversary of Indian independence. By then, we are committed to provide that we will ensure housing for every family in this country, and we are also making efforts to double the farmers' income. And almost every efforts have been made in this direction. The roadmaps are ready, the commitments are clear, and we will fulfill all the promises. By 2024, we make India as one of the greatest superpower in the world. The nation, the Modi government is targeting for a 5 trillion economy to become the third largest economic force in the world. These are the set targets, and people are convinced that only Narendra Modi government can deliver this, and we are sure that the nation will once again support us and elect the Modi government. Thank you, Mr. Balasubramaniam. Can I now request Professor Gaurav to tell us about the Indian National Congress vision? Thank you and namaskar to all the listeners. I will share the Congress vision in 5 parts. I will talk on 5 broad issues. First issue which I would like to talk is on the Nyay. When we say Nyay, it means we propose that when we are going to form the government in 2019, from 2019 onwards, for 5 crore families, 72,000 rupees per annum will be transferred from government to a female member of that particular family. And why this Nyay scheme is a game changer? Because when the India got independence in 1947, 70% of people were categorized as poor, which are 20% currently. So we want the Nyay scheme should be the Antim Var on Garibi, Antim Var on poverty. So, ab ki baar 72,000. That is the first thing which I want to share with my listeners. Second is employment. See, currently, India is in the 45 years highest unemployment level. And it is not that it had become because of global factors. We reached to this stage because the current government did a demonetization scam. That country is witnessing 45 years highest unemployment level. So to remove that, we propose 2-point strategy. First point is that 24 lakh government vacancies we are going to fill within a year's time from the day we are going to form government, and 10 lakh additional government jobs we are going to create at the panchayat level. So roughly there are 2.5 lakh panchayats in our country. So at each panchayat level there will be 4 government jobs which will be new creation. Second, for the private sectors we had a lot of inputs, like we are going to abolish angel tax. For the first 3 years there will be no NOC requirement. So how to groom the entrepreneurship spirit of our country, that is going to create employment in the private sector. The third thing which I want to talk is on agriculture. In agriculture also 2 points I would like to highlight. First, we want to move from loan waiver to freedom from loan. Karz maafi se karz mukti ka safar. That is what we used to say this. And second, we are going to have debt as a civil liability, because lot of times in the current government the non-payment of loan is treated as a criminal liability. So we are going to change this to civil liability. Fourth issue which I would like to share with the listeners is how we are going to save constitutional and autonomous bodies. I would like to share with the listeners, had you ever heard in the history of India that the CBI director is removed at 2 o'clock in midnight? The Delhi police is taking over the charge over the office of the CBI? No. Had you ever heard, listeners, that 4 Supreme Court judges are coming out and saying democracy is in danger? No, we had never witnessed these things. So we are going to save the constitutional and autonomous bodies, which is having a serious and a severe dent from the current government. And the fifth issue which I would like to discuss is something on the women. We propose a 33% of women reservation in all government jobs, including government sector, including the state level government job. So that is the proposal, which 5-point strategy we are moving with the voters, and we are very hopeful that this Anyay is going to conclude and the people are going to have a faith in the Nyay what Congress party had shared with the people of India.
Thank you, Professor Gaurav. Thank you very much. It's my privilege to request Mr. Sudhin Bhadodia of the Bahujan Samaj Party to now put forward his views on his manifesto. Let me first welcome all the Indian voters to take part in this election with all their strength, and they have done this so far in the 2 rounds of polling that have taken place, and I'm quite sure this 17th Lok Sabha elections will see a huge participation of the Indian people to make democracy a great success. Now let me put this whole debate in perspective in the context of the election manifestos that we are discussing. We would like to put forward our point of view, which is little distinct from the point of view as presented by the earlier presenters from national parties. Our point is that we as Bahujan Samaj Party workers, and as well as those who have formed the Gathbandhan, we believe that this whole election has to be between Jumla versus the reality. You see, those people who make tall claims and make great promises, make these promises without realizing that they are making false promises, and that has been the track record so far. We saw in 2014, the BJP made a huge promise of Sabka Saath, Sabka Vikas and bringing Achhe Din to the 130 crore people of this country. We saw in this that the farmer suicide increased. We also saw that the unemployed youth, their numbers skyrocketed. We also saw that the unemployed youth who were suffering, there were hunger, poverty all around in Indian society. And therefore we feel that whole election has to be perceived in the context of what your past performances have been. Now they are saying that this time they are going to also bring about a lot of welfare for the people. Now in this context I must say this, that whether it is the BJP or the Congress talks of Nyay today, they talked of the Garibi Hatao 50 years back, they did nothing about it, and so has the BJP done nothing about banishing poverty from this country or hunger from this country. On the contrary to this, we saw in Una, the Dalits were being lashed on their backs. There was lynching taking place across country. We also saw that rape cases were increasing. So therefore, the Gathbandhan of the Bahujan Samaj Party along with the Samajwadi Party and RLD, this context I must reiterate the slogan raised by Bahan Mayawati ji in Mainpuri, Jai Bhim, Jai Lohia. These two icons represent the real dreams of the toiling masses of this country. Jai Bhim because Baba Sahib Bhimrao Ambedkar, who gave us the Constitution of India, and along with, of course, many others, the Constitution underlines everything that has to be done in this country. That is the document that we imbibe and also follow it in letter and spirit. And similarly, Dr. Ram Manohar Lohia, for the downtrodden of this country, for the women of this country, and for the toiling masses, including the farmers, the Dalits, the OBCs, want that through this election, we must bring forward an agenda, and we have shown it in successive governments in UP when Bahan Mayawati ji has been the chief minister, and so has Akhilesh Yadav. Bahan Mayawati ji gave 9% growth to UP. We saw that UP progressed tremendously during that time. Similarly, the Akhilesh Yadav's government did a lot of development projects from the roads to the metro and so many other aspects of the development process where farmers also gained a lot. So therefore this election is going to be around the progress of, I must here underline that the youth and farmers of the country are looking towards this Gathbandhan, and the women's support and the sections of all those people, the working people of this country, are going to back the Gathbandhan on the past promises that we have done and performed and shown to the people of this country. Thank you very much. Can I now request Mr. Nilotpal Basu of the Communist Party of India, Marxist, to elaborate on the vision? This general election is marked by an unprecedented acrimony, and the most unfortunate part of this is that acrimony is led by the Prime Minister himself. Naturally, in an electoral democracy, it is the convention that the ruling party, they present the record of their governance. But we are seeing a very strange spectacle where the Prime Minister doesn't speak of the record of his governance, but actually hits out at the opposition. Now this is because of the fact that there are two areas particularly and which embrace the overwhelming majority of the country, the farmers and the youth.
You see, we are going through an unprecedented agrarian distress. The rate of farmer suicides have grown, and there is a qualitative change in that the farmers are not mutely accepting this situation. They are coming out unitedly on the streets and very sharply asserting what they need. And it is, as somebody was pointing out, not just the loan waiver, but a guarantee for the produce that they are really indulging in producing. And on the other hand, the question of unemployment. Now, I was just amused to see that how can people say that there has been delivery. You see, now just that jobs have not disappeared, but even data for jobs is being made to vanish by the government. This is the unprecedented by all standards. So I think these are the two issues on which intervention is needed. So far as the Communist Party of India Marxist is concerned, our intervention will be for a government where these two key issues are addressed. Now, in the case of farmers and the agrarian situation, unless there is an intervention from the government itself, you see, we cannot solve. People may talk about Fasal Bima Yojana, for example. Now, again, a common thread has run in the functioning of the government where there has been unabashed promotion of cronies. You see, there is some data that every month, 11 crores of farmers' money has gone to the pocket of private insurers. So I think these kind of things have happened all throughout. I mean, whether the question of security, national security has also been affected. So unless we really separate the corporate influence on the polity itself, where we have seen the government coming up with the scheme of electoral bonds, whereby there is unprecedented funding for the corporates, and for a few the government has run. So unless the government is brought back where people can assert and opine in shaping the policies, I think from that standpoint, the whole question of attack on institutions, attack on the constitutional order, attack on the rule of law, we are seeing that some under trial for a terrorist case is being promoted. So I think we have to unite the people, and the CPIM's vision is precisely unite this 99% of the population who are fighting it out against 1% with a kind of encouragement they have got from the government. And this covers everybody, workers, peasants, those who are at the receiving end of social injustice, the Dalits, the tribals, the women, and so on and so forth. So I think it is the people versus the government, and we expect that the people will recognize their power and take on this monstrous governance that we had in the last 5 years. Thank you very much, Mr. Basu. I am now honored to request Mr. Pratap Chaudhary of the Nationalist Congress Party to put forward his views on his manifesto. As far as the Nationalist Congress Party is concerned about this forthcoming election, our leader has strategically stated once and many times, this election is an opportunity for all the citizens of this country to come united and defeat the divisive forces which wants to divide the society on certain other things which are not related to us directly. The main question today, as all my friends have spoken about the farmers and the youth and the unemployment, these are very big questions facing the country. As far as the farmers are concerned, suicides have gone up, whereas they are barred to sell their produce anywhere in the country where any industrialist can send its own product all over the country. So many restrictions on their produce, procurement, selling is there, and this government has virtually done nothing about that. As far as the employment is concerned, my party has already stated that job-oriented programs should be there in the country for the youth, which this government is lacking behind many times. As far as the security and other things are concerned, this country since 1947 has witnessed many wars, I think, which all of you know, and the country has stood united to face it and to expel the terrorists out from the country. But this government's sole agenda is based on
dividing the society, let it be on communal lines, let it be on Dalit versus upper caste, let it be youth versus or anything. And what to talk of the women? They have a slogan, Beti Bachao, Beti Padhao. And whereas I think all the atrocities of the women folk has gone manifold up during this regime. And basically nothing has been done for that. Our party is a visionary. We have a leader, such leader as Sharad Pawarji, who has been honored by this government itself by Padam Bhushan in 2017 for his good work. And now in this election, I feel sorry to say, in Maharashtra, he is asking Pawarji what has he done. If he has done nothing for the betterment of the society and the people, why did this government give Padam Bhushan to him? This is a question they must answer themselves. As for my party, the main emphasis will be again on the farmers' issue, unemployment, and women folk. And the most important of all, we must bring all the people of India to feel safe and united, which our constitution makers have done it. Why alienate certain section of society? Let it be particularly minorities. Why corner them for any bad thing which is done? Nobody has a monopoly for a bad thing. Anything can happen. So all these things have to be stopped, I think. And the present government and the Prime Minister is responsible to take the country in confidence on the issues which he has promised in the last election, not on other things which are immaterial at the moment. Thank you, Mr. Chaudhary, for putting forward the views of your party. Can I now request Mr. D. Raja to say what the Communist Party of India is presenting as vision to the country? My party, the Communist Party of India, has shared its vision with the people of our country through its manifesto. India is a socialist, secular, democratic republic. Now our republic is in existential crisis. The foundations of our republic are under attack, dismantled. The constitution is under attack. Democracy is in peril. The secular democratic fabric of our society has been attacked and being destroyed. In such a situation, how to safeguard Indian Republic as defined by our constitution. So we need to safeguard our constitution, save our constitution, because there are voices from the ruling dispensation. This constitution given to us by Dr. Ambedkar and galaxy of leaders should be thrown out, and they want to establish their own constitution based on their own vision of the Hindutva or whatever they may call it. But Ambedkar rejected any form of theocratic government or state in India. Ambedkar rejected the